Assalamu alaikum class, welcome back to another YouTube tutorial, and in this tutorial I will let you know about eigenvalues, eigenvector and also eigenspace. In the last lecture we can show how we can calculate our eigenvalues, but in this lecture there is a little bit change. We can calculate our eigenvalues plus eigenvector, additionally our eigenspace. So starting with our question. So what is our question? Find the eigenvalues and eigenvector of the given matrix and find eigenspace. We can calculate our three things. One is eigenvalues, and second is eigenvector, and the third and the last thing is eigenspace. So now starting with our given matrix, which is 4 0 0 5 3 2 and minus 2 0 and 2. So by using a minus lambda I equals to 0, we can calculate our lambda. So our A is A matrix. A is 4 0 0 5 3 2 and minus 2 0 and 2. Now the minus and lambda and I is our identity matrix. So 1 0 0 0 1 0 and 1 no sorry 0 0 and 1. So in the next step we can calculate our lambda. 4 0 0 5 3 2 minus 2 0 and 2. So minus sign is here. Now we can multiply our lambda into our identity. So lambda 1 is a lambda 0 is a 0 0 0 lambda 1 is a lambda and 0 0 0 lambda. So now we can multiply our matrix to our identity, which we can calculate. So 4 minus and lambda, we can multiply this. 0 0 is a 0 and 0 0 is also 0. Now R2 5 0 is a 5 minus 0 actually 3 minus lambda and 0 minus 2 0 0 is a 0 and this thing is 2 minus lambda. Now moving towards our next step. In the next step we can decompose our 3 by 3 matrix into 2 by 2 matrix. This will become 2 minus 0 is 2, so 2. Now we can take this R1 4 minus lambda bracket close, and this is our 2 by 2 matrix 2 0 and 2 minus lambda. So this will become 4 minus lambda, and we can multiply this, cross multiply this. 3 minus lambda and 2 minus lambda, and we can also multiply this 0 and 2 bracket close equals to 0 and equals to 0 because ये 0 हमारे पास इधर से आया, हमारे पास इधर से आया,
a minus lambda I equals to 0. So a minus lambda I equals to 0. A is our matrix minus lambda I is our identity and equals to 0. So as we can see, the value of our lambda is 4 minus lambda equals to 0, comma 3 minus lambda equals to 0, comma 2 minus lambda equals to 0, and this will become 0. 0 to the 0 equals to 0. So our lambda will become lambda equals to 4, comma lambda equals to 3, comma lambda equals to 2. So our first step is complete. What is our first step? आइगन वैल्यूज़, मतलब हमें लैम्डा फाइंड आउट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया. नाउ सेकंड स्टेप इज़ आइगन वेक्टर. आइगन वेक्टर में हम क्या करते हैं? आइगन वेक्टर में हम बाय यूजिंग लैम्डा वी कैन कैलकुलेट आर आइगन वेक्टर. हाउ? हमारे पास जो ये वाली फॉर्म बनी थी, जहाँ जहाँ पे लैम्डा है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4 के लिए सॉल्व करेंगे और इसके लिए हम सॉल्यूशन बनाएंगे अपने, और देखेंगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है भी कि नहीं. एंड अगेन हम 3 के लिए भी एज इट इज़ यही करेंगे और अपने 2 के लिए भी एज इट इज़ यही करेंगे हम अपने आइगन वेक्टर के लिए. Now after eigenvalues we can calculate our eigenvector for lambda is equal to 2 by using this a minus lambda I x equals to 0. So in the previous eigenvalue our a minus lambda I is 4 minus lambda 0 0 0. I will show you where we can find this from this. So 4 minus lambda 5, 3 minus lambda 2 and 0, and minus 2 0, 2 minus lambda and 0. प्रीवियस में हमने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट की थी, लेकिन ये 0 कहाँ से आया? 0 यहाँ से आया, फार्मूला से आया. ए माइनस लैम्डा मतलब ए माइनस लैम्डा आई हमने ये लिख लिया, एंड इक्वल्स टू 0 मतलब तीनों के साथ आएगा 0. सो नाउ वी कैन पुट आवर वैल्यू विच इज़ 2. सो 4 minus 2 and 0 0 and 0, 5, 3 minus 2 2 and 0, and the last one is minus 2 0, 2 minus 2 and 0. So we can calculate this. 4 minus 2 is 2 and 0 0 and 0, and 5, 3 minus 2 is 1, 2 and 0, minus 2 0 0, 2 minus 2 is 0, and this will also become 0. So this is our matrix, and now by using reduce echelon we can calculate further. So हम क्या रॉ ऑपरेशन लगाएं कि हमें इधर पिवट में 1 चाहिए. रिड्यूस इक्लॉन में 2 को 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? R1 मल्टीप्लाई बाय 1/2. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 होता है. 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1, 2 1 2, 1 1, and 0 0 0 will remain 0 because anything multiplied by 0 is 0. So 0, R1 की जगह हमने 0 पुट किया तो 0 0. Now 5 1 2 0 minus 2 0 0 and 0. As you can see the pivot is in the first column, and हमें pivot के नीचे क्या चाहिए होता है? 0.
सो पिवट के नीचे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉजिटिव का 5 है तो, और कहाँ पे R2 में, R2 पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव ले लेंगे 0 बनाने के लिए, -5 and by using our pivot is 1, so R1, so this will become, row 1 will remain same, 1 0 0 and 0 and R2 हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। R2 में हमारे पास क्या था, 5 था, 5 -5 एंड R1 में 1, सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 -5 इक्वल्स टू 0, सो ये हमारे पास 0 बन गया। एंड एज इट इज़ हम इसको भी पुट करेंगे 1 को बाय यूजिंग दिस, सो दिस विल बिकम 1 एंड दिस 2 विल ऑल्सो रिमेन सेम। आप लोग ये पुट करके देख सकते हैं, हमारे पास सेम ही आएगा, -2 0 0 एंड 0। नाउ पिवट के नीचे हमें 0 चाहिए होते हैं, हमारे पास पिवट के R2 में 0 आ चुका है लेकिन R3 में अभी नहीं है, तो R3 को हम 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ड्रॉ ऑपरेशन लगाएंगे। हमारे पास R3 में क्या है, -2, सो R3 -2 हम पॉजिटिव कर लेते हैं, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, अभी नेगेटिव है -2, सो इधर पॉजिटिव लेंगे +2 एंड बाय यूजिंग आर पिवट R1, सो R3 में हमारे पास क्या है, -2 +2 and R1 is pivot which is 1, so 2 1 are 2 plus -2 minus plus is minus and 2 minus 2 is 0, so 1 0 0 0 and 0 1 2 and 0 and we can solve this and this will become 0, anything multiplied by 0 is 0, so हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 0 ही आएगा। सो ये हमारे पास जो ये फॉर्म आई है, ये हमारे पास है रिड्यूस इक्लॉन, सो ये हमारे पास रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म है। वो कैसे, क्योंकि इक्लॉन में हमारे पास सिर्फ पिवट के नीचे हमारे पास 0 होता है, लेकिन रिड्यूस में हमारे पास ये भी पिवट है, दिस वन इज़ पिवट एंड दिस वन इज़ पिवट, एंड हमारे पास रिड्यूस में पिवट के नीचे और ऊपर 0 होते हैं। पिवट के लेफ़्ट साइड पे कुछ भी हो, एनीथिंग इट डजेंट मैटर, पिवट के नीचे और ऊपर ये दिस वन इज़ पिवट, पिवट के नीचे हमारे पास डायगोनल में 0 एंड पिवट के ऊपर भी हमारे पास 0, सो दिस इज़ आर रिड्यूस इक्लॉन एंड आफ्टर दिस we can calculate our solution. So after this we can find our solution by using basic and free variable. So basic and फ्री वेरिएबल होता क्या है, बेसिक वेरिएबल बेसिकली ये होता है, बेसिक वेरिएबल हमारे पास पिवट होता है, पिवट, सो दिस इज x1 x2 x3 एंड दिस कॉलम इज b, सो हमारे पास पिवट कहाँ है, x1 में, x1 बेसिक इज इक्वल टू x1 में हमारे पास एंड x2 में, सो x2 एंड व्हाट इज़ फ्री वेरिएबल, फ्री वेरिएबल ये होता है पिवट जिस कॉलम में वो हमारे पास बेसिक वेरिएबल बन जाता है, एंड फ्री वेरिएबल जिसमें पिवट नहीं होता, पिवट ये है और फ्री वेरिएबल हमारे पास क्या है, x3, सो x3, सो अब हम अपने सॉल्यूशन बनाएंगे, कैसे, हमारे पास 3 चीज़ें थी, x1 x2 एंड x3 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, सो x1 x2 एंड x3। नाउ अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम अपना x1 कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ x1 इज़ 1 x1, इधर कर लेते हैं हम 1 x1, इसको देखते हुए हम सॉल्व करते हैं,
x1 and plus 0 and plus 0 equals to 0. This is b equals to 0. So x1 plus 0 equals to 0. So this will become x1 is equal to 0. So this is 0. Now x2, ये 0 कैसे आया? x1 इज इक्वल टू 0. x1 हमारे पास क्या था? 0 आ गया. सो नाउ फॉर x2 में हमारे पास क्या है? x2 में अगेन हमारे पास 1 है. सो हम कैसे लिखेंगे? 1 x1 के बाद हमारे पास 2 है. सही है, हम लिख लेते हैं 2. लेकिन 2 कहाँ पे है? x3 पे. सो 2x3 इक्वल्स टू 0. सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. x1 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0. x1 इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव था, उधर राइट हैंड साइड पे जाके नेगेटिव का हो गया, -2x3. सो दिस इज़ x2. ये हम x2 के लिए कर रहे थे, x1 हमने कैलकुलेट कर लिया. x2 इज इक्वल टू -2x3. सो x2 विल बिकम -2x3. सो नाउ सिमिलरली फॉर x3 हमारे पास क्या है? 1. बेसिक जो हमारे पास फ्री वेरिएबल होता है वो हम उसको किससे डिनोट करते हैं? 1 से. फ्री वेरिएबल हमारे पास कहीं पे भी आ जाए, रिड्यूस क्लोन में कहीं पे भी आ जाए, हमारे पास जो भी फ्री वेरिएबल होगा, सपोज़ हमारे पास x2 होता है फ्री वेरिएबल, तो हम x2 की जगह 1 लिखते हैं. अभी हमारे पास x3 है, सो हमने x3 की जगह क्या लिखा? 1 लिखा. सो अब हम इसको कैसे लिखेंगे अपने फाइनल आंसर में? 0 1 एंड -2. सो दिस इज़ फॉर lambda equals to 2. Now similarly we can calculate for our lambda equals to 3. So हम पहले लिख लेते हैं अपने 4 minus lambda 0 0 and 0. So 5 3 minus lambda 2 0 minus 2 0 2 minus lambda and 0. ये हमारे पास कहाँ से आया? a minus lambda I इक्वल्स टू 0. यहाँ से आया जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था वेरिएबल के लिए. इक्वल्स टू, नाउ अब हम 3 पुट करेंगे. हमने 2 के लिए कर लिया, अब हम 3 के लिए करेंगे. 4 minus 3 0 0 and 0. 5 3 minus lambda लैम्डा की जगह हम 3 पुट करेंगे. 3 minus 3 2 and 0 -2 0 2 minus 3 and 0. So 4 minus 3 is 1 0 0 and 0. And now 5 3 minus 3 is 0 2 and 0. And similarly for x3 2 0 2 minus 3 is -1 and 0. Now by using raw operation we can calculate. So हमारे पास ऑलरेडी R1 में हमारे पास पिवट है 1. सो हम इसको कुछ नहीं करेंगे. सो R2 के लिए क्या रॉ ऑपरेशन लगेगा? R2 is 5 positive 5, so we can take -5 and by using pivot is R1. So R2 is 5 minus 5 and this is 1 equals to 5 and the 5 minus 5 equals to 0. So we can write 1 0 0 and 0 and this is 0 and this will also become 0. This will remain same and this will also remain same. -2 0 -1 and 0.
नाउ अब हमें R3 में भी ज़ीरो चाहिए पिवट के नीचे, सो हम क्या रो ऑपरेशन लगाएंगे, आर नेक्स्ट पेज के पर कर लेते हैं R3, वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव का 2 था, सो पॉजिटिव का 2 एंड बाय यूजिंग पिवट, पिवट इज़ R1, सो R3 में हमारे पास क्या था, माइनस का 2 प्लस 2 एंड दिस इज़ 1 and this will become minus 2 plus 2, 2 ones are 2 and minus 2, minus plus minus is 0, so we can write 1 0 0 and 0 and 0 0 1 0 and this will become 0, this will also become 0, minus 1 and 0. एज़ यू कैन सी R1 में हमारे पास पिवट आ चुका है एंड R2 में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास फ्री वेरिएबल है. R3 में हमारे पास पिवट है, बट R3 में हमारे पास पिवट के नीचे -1 है, तो हमें 0 चाहिए पिवट के नीचे. रिड्यूस विद क्लोन के लिए हम क्या करेंगे, क्या रो ऑपरेशन लगाएं, R3 में हमारे पास -1 है प्लस बाय यूजिंग पिवट प्लस R2, so this will become -1 and plus 1 is 0, so we can write as 1 0 0 0 0 0 1 0 and 0 0, this will become 0, so we can write 0 and 0. So now we can find our basic variable and free variable. Basic variable and free variable. So our basic variable is x1 because there is a pivot in x1 and x3, and this is free variable because there is no pivot in this column, so this is x2, so we can write as x1 x2 and x3, and this is our x1 1x1 1x1, this is x1 x2 x3 and this is b, x1 plus 0 and equals to 0, x1 plus 0 equals to 0, this is equals to, so x1 is 0, so x1 is 0, so this will become 0. our x2 is free variable, so अगर जो भी फ्री वेरिएबल होता है वहाँ पे क्या आता है 1, so this is 1, this will become 1 and the last one is x3. x3 में हमारे पास क्या था 1 था, 1x3 equals to 0, so this will become x3 is 0, so our final answer is 0. There is x2 is free variable x2, and we can write our final answer as 0 1 and 0. We can write as for lambda equals to 3, the corresponding CORR eigen vector is, this is our eigenvector 0 1 and 0. Now we want to make our pivot in R1 and R1 is -2. How we can make this, R1 multiply by -1/2 because माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा and this will become 1, so R1 में हमारे पास 2 था, तो -2 multiply by -1/2 and 2 ones are 2, 2 ones are 2, माइनस से माइनस कैंसिल and 1, so this will become 1, 0 multiply by anything is 0, and this will also become 1 because there is -2 multiplied by -1/2 is 1 and this is 0, 5 -1 2 and 0, and after this R3 is 0 0 0 and 0. now अब हमें
पिवट के नीचे 0 चाहिए, लेकिन R2 में हमारे पास अभी भी 5 है। सो हम क्या ऑपरेशन लगाएं जिससे हम इसको 0 बना लें। तो R2 में हमारे पास 5 है, हम R2 एंड पॉजिटिव, सो हम नेगेटिव ले लेते हैं -5 बाय यूजिंग पिवट इज इन R1, so R2 is 5 minus 5 and R1 is 1, so 5 ones are 5 minus 5 and 5 minus 5 is 0, so this will remain same, this will become 0. And similarly for this one, R2 में हमारे पास -1 था, -1, सो हम इसको सॉल्व करेंगे -5 एंड R1 में हमारे पास -1 के ऊपर क्या था 0, सो 0 -5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0 एंड दिस वन become -1 and this will become 3 and this will remain 0 and 0 0 0 0. now we can see that we have 0 एंड हमारे पास पिवट के नीचे 0 आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास -1 है। -1 में हमारे पास पिवट नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, -R2 कर देंगे, -R2 कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हमें पॉजिटिव में चाहिए हमारे पास पिवट, तो माइनस एंड -1, माइनस माइनस इज प्लस, सो this will become R. now we can write as 1 0 1 0 and 0 1 3 0 0 0 0 and 0. now as you can see, this is our reduced echelon, and now we are moving towards our solution. x1 x2 and x3 is equal to 1x1 x1 x3 equals to 0, x1 plus x3 equals to 0 and x1 will become -x3, our x2 is 1x2, so this is x1 x2 plus this is x3 and x3, but there is 3, so we can write as 3x3 equals to 0 and this will become x2 equals to -3x3 and our x3 is free variable, so we can write 1. so the final answer is -1 -3 and 1. now this is our eigenvector, and now we want to find our eigenspace. This thing is very easy. Eigenspace is x1 x2 x3, we can write as equals to, our first vector is lambda 2, which is 0 -2 and 1, comma, and our lambda 3 is 0 1 0 eigenvector, and our final is lambda 4, which is -1 -3 and 1. so this is our final eigenspace.